अस्सलाम वालेकुम जी, मां हावा जी मेज़बान इकरा कुरैशी प्रोग्राम सेफ एंड हेल्दी फूड सां गॾु कीअं आहियो? उमेद थी कयां सभु ख़ुशि हूंदो, ठीकु हूंदो ऐं पाण सां गॾु पंहिंजनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा हूंदो। जी हाँ, ख़्यालु रखणु सिर्फ़ु तव्हांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न आहे, पर हिकु ॿियो सिंध गवर्नमेंट जो ज़बरदस्त डिपार्टमेंट सिंध फूड अथॉरिटी उहो बि ॾींहुं राति कोशिशि करे रही आहे त तव्हांजे मुंहिंजे ऐं जेके समूरे असांजे मुल्क में तोड़े असांजे पूरे सिंध में मारवाड़ आहिनि उन्हनि जी टेबल्स ते सेफ एंड हेल्दी फूड पहुचे। सिर्फ़ु मां इन शइ ते इन टॉपिक ते ऐं असांजे जेको फूड आहे उहो कीअं सेफ ऐं हेल्दी रहिजे इन ते सिर्फ़ु मां न ॻाल्हाईंदमि, बट सिंध फूड अथॉरिटी जी अॼु असां वटि मेंबरान मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां असां गुफ़्तगू कंदासीं, उन्हनि खां ॼाणींदासीं त असां पंहिंजे फूड खे हेल्दी कीअं बणायूं ऐं सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त सेफ कीअं बणायूं। सभिनी खां पहिरीं मां वेलकम कंदमि सिंध फूड अथॉरिटी जे DG साहब के, डायरेक्टर जनरल साहब के, आगा फ़खर हुसैन असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम। ऐं न सभिनी खां पहिरीं वॾी महिरबानी, तव्हांजो एॾो बिज़ी स्केड्यूल रहंदो आहे, इवन जेके ड्यूटी आवर्स आहिनि उन खां अलावा बि तव्हांखे ॾिठो वियो आहे काफ़ी एक्टिव रहंदा आहियो, उन मां बि टाइम कढी आयो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? अच्छा जी, जीअं मूं चयो त मेंबरान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। DG साहब जो जेको चहिरो आहे उहो त सदाईं असां हिन प्रोग्राम में ॾिसंदा ई ॾिसंदा आहियूं, छो जो चवंदा आहिनि न त अगरि को मखसूस जीअं असां हेल्थ जो ऐं फूड जो हे प्रोजेक्ट आहे या सब्जेक्ट आहे त उन में हिकु ॾाहनि जी काफ़ी ज़रूरत हूंदी आहे ॻाल्हाइण जी, जीअं असां जे स्क्रीन जे थ्रू धरती TV जे थ्रू तव्हां ॾे उहे ॼाण पहुची सघे। अच्छा जी, जीअं ॿिया मां चयो त मेंबरान मौजूदु आहिनि सिंध फूड अथॉरिटी जेके आहिनि, काफ़ी अहिड़ा मेंबरान, काफ़ी अहिड़ियूं इंस्टीट्यूशन आहिनि जेके कोलेबोरेट कयो आहे सिंध फूड अथॉरिटी सां गॾु, त उन्हनि जो बि मां ज़रूरु तारीफ़ कराईंदमि। हिन पासे असां वटि प्रोफेसर ऐं डायरेक्टर मौजूदु आहिनि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो जा डॉक्टर सैयद तुफैल हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खुश हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, आपके सामने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, इन सां गॾु जेको आहे उहे ॿिए बि असां वटि ॿिया मेंबर मौजूदु आहिनि ऐं इन्हनि जो मां ईअं चवंदमि त अॼु मुंहिंजी ॼाण में काफ़ी इज़ाफ़ो थियो आहे, छो जो जॾहिं मां इन्हनि जो एंट्रू ॿुधियो त असांजी टेबल ते जॾहिं बि को खाधो ईंदो आहे पहिरीं इहो हूंदो त अहिड़ो ज़्यादा एतिरो कॉन्सेप्ट न हूंदो हुयो, पर हाणे इहो काफ़ी ज़्यादा आहे त असां चेक कंदा आहियूं ऐं असां जेको आहे उहो ज़रूरी सम्झंदा आहियूं त असांजे जेके टेबल ते खाधो थो अचे उहो हलाल ई हुजे। उन शइ खे इहे केरु आहे न वेरीफाई कंदो आहे ऐं केरु ॾिसंदो आहे, केरु लुक आफ्टर कंदो आहे? असां वटि डॉक्टर साहब उहे मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो बि उन्हनि खे मां वेलकम कंदमि। डॉक्टर मुफ्ती सैयद आरिफ अली शाह असां सां गॾु आहिनि, जेके जनरल मैनेजर आहिनि हलाल सर्टिफिकेशन टेस्टिंग एंड रिसर्च सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खुश हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वॾी महिरबानी, तव्हां टिनी जी वॾी महिरबानी त तव्हां अॼु असांजे हिन एपिसोड जो हिसो बणिजिया आहियो। गुफ़्तगू जी शुरूआत मां DG साहब खां करणु चाहींदमि त अॼु जो टॉपिक जीअं असांजो आहे त असां जेको खाधो खुराक खायूं था, असांजी जेका खुराक हूंदी आहे या असां जेको खाधो खायूं था, असां सिर्फ़ु टेस्ट ते ज़्यादा असां फोकस हूंदो आहे हर किथे, पर उहो कहिड़े प्रोसीजर तां गुज़री करे असांजी टेबल्स ते अचे थो, उन जो मां चाहींदमि त उहो ब्रीफली उहो जेको ब्रीफ कनि उहे पाण जनाब DG साहब पंहिंजी ज़बानी कनि। जी DG साहब। महिरबानी तव्हांजी। अॼु जेको तव्हां टॉपिक सिलेक्ट कयो इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे। त असां जॾहिं खाइण वञूं था त उन में बुनियादी शइ जेकी आहे उहा फूड जी हाइजीनिक हुजणु, सेफ हुजणु ऐं हेल्दी हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। ज़ाइका जेके आहिनि न उहे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कुक्स सां डिफरेंट रेसिपीज़ में चेंज थींदा रहंदा आहिनि। ज़ाइकनि खे असां घणो गौर कंदा आहियूं, असां जिते बि खाइणु वेंदा आहियूं असां पाण में डिस्कस करे वेंदा आहियूं त यार हिन जो जेको पचाए थो ॾाढो भलो ज़ाइको अथसि ऐं ॾाढो सुठो खाइण में लज़ीज़ आहे ज़ाइके जे हवाले सां, पर असां इन शइ खे घटि ध्यानु ॾींदा आहियूं त जेको हो तयारु थियल आहे, जेकी शइ तयारु थियल आहे उहा केतिरी हाइजीनिक आहे, केतिरी हेल्दी आहे ऐं सेफ आहे या न।
पोइ इन हवाले सां जेको सिंध फूड अथॉरिटी कमु कंदी आहे उहा इहा ई कंदी आहे त जेकी राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन मसलन का बि शइ जितां प्रोड्यूस थिए थी उतां खां असां उनखे चेक कंदा ईंदा आहियूं वेंदे कंज़म्पशन ताईं आख़िरी गिरह ताईं जेको तव्हां गिरह खायो था उन ताईं असां ॾिसंदा आहियूं उन्हनि शयुनि खे असांजो जेको बुनियादी मक़सदु इहो ई ॾिसणु हूंदो आहे त इहा शइ सेफ आहे या न हेल्दी आहे या न पोइ उन में असांजा डिफरेंट पैरामीटर्स आहिनि मसलन असांजो पहिरियों पैरामीटर इहो आहे त असां शयुनि खे फिज़िकली ॾिसंदा आहियूं खोड़ शयूं फिज़िकली बि ख़बर पइजी वेंदियूं आहिनि असां ॾिठोसीं अखियुनि सां असांखे लॻी त न हिते जेको एॾो माहौल आहे उहो इंतिहाई अनहाइजीनिक आहे ॾिसण में ई अचे थो न ऐं प्लस जेकी शइ पई आहे उन मां स्मेल थी अचे ख़राबु थी लॻे हिकिड़ो त इहो थी वियो फिज़िकल पोइ वरी कुझु शयूं ॾिसण में सुठियूं नज़र ईंदियूं आहिनि तव्हांखे पर हूंदियूं एक्सपायर सही ठीकु आहे पोइ उनजी कीअं ख़बर पए उनजो वरी ॿियो जेको तरीक़ो आहे उहो इहो आहे सेकेंड स्टेज इहा आहे त असां केमिकल टेस्ट कंदा आहियूं जेके उते बि परफॉर्म करे सघूं था लेबोरेटरीज़ में बि परफॉर्म करे सघूं था असां वरी इन खां अञा अॻिते वेंदा आहियूं अञा जेके हाणे असां एडवांस लैब्स था कयूं या जिते कमु कयूं था त उहो असां उनखे चेक कंदा आहियूं त जेको असां खाद खायूं था या जेको खुराक खायूं था उनखे असां वरी बायोलॉजिकली बि ॾिसंदा आहियूं माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट कंदा आहियूं उन जा कुझु उन्हनि में अहिड़ा केमिकल्स विझी कई ॾींहं छॾे ॾींदा आहियूं त उन ते केमिकल्स कीअं रिएक्ट था करनि त उन मां ख़बर पइजी वेंदी आहे त जेके शयूं असांजी जेके उन जे अंदरि कहिड़े अहिड़ा क़िस्म जा जरासीम आहिनि जेके इंसान जी सिहत खे नुक़सानु ॾेई सघनि था त इहो सभु शयूं पर हाणे अॼु जेको टॉपिक आहे उन में जीअं पाण डिस्कस कयूं पिया थोरी देरि अॻु में बि त जेको रोल आहे लेबोरेटरी जो उन में टेस्ट जी एक्यूरेसी जो जेको रोल आहे उहो ॾाढो ज़रूरी आहे असां कीअं ख़बर पए त जेको मसलन मुंहिंजी कंहिं लैब में टेस्ट थियो आहे उहो एक्यूरेट थियो आहे या न सही मसलन असां हिकिड़ी फैक्ट्री में वियासीं असां उन्हनि जा फूड हैंडलर्स जा टेस्ट कयासीं उन सॼी फाइल पई हूंदी आहे ब्लड जी त असां ॾिठोसीं सॼी फाइल जेकी आहे उन में होमोग्लोबिन जेको आहे उनजो 14.5 हुयो माना टेस्ट ई ग़लति हुया सही हाणे तव्हां सम्झो त उन फैक्ट्री में टेस्ट कराए रखिया ऐं असांखे ॾेखारण लाइ पर असां जॾहिं उन्हनि जो टेस्ट खोले ॾिठोसीं फाइल त सभई 14.5 त इहो हाउ इट इज़ पॉसिबल त तव्हांजो बि 14.5 हुजे साईं जो बि मुंहिंजो बि असां सभिनि जो 14.5 नथो थी सघे त ब्लड वेरीज़ करे सघे थो इहा जेकी एक्यूरेसी आहे अहिड़े क़िस्म जी जेकी एक्यूरेसी आहिनि या टेस्ट जी जेकी एक्यूरेसी आहे उन सिलसिले में असांखे जेकी यूरोपियन यूनियन या इंटरनेशनल जेके डोनर्स आहिनि उन सां गॾु मिली असां कमु पिया कयूं ठीकु आहे अॼु बि असां हिकिड़ो तमामु सुठो सेकेंड सेशन कयोसीं असां पंहिंजा जेके स्टूडेंट्स आहिनि जेके असांजा सिंध फूड अथॉरिटी में जेके असां वटि कमु करनि पिया प्लस डिफरेंट फूड अथॉरिटीज़ में जेके कमु करनि पिया उन्हनि खे बि असां हिते ट्रेंड था कयूं त जेकी ISO जी सर्टिफिकेशन आहे स्पेशली इन हवाले सां त लैब में जेको बि टेस्ट थिए एक्यूरेट थिए सही त उन ते असां ॾाढो ज़बरदस्त रोल प्ले कयोसीं ऐं उन्हनि ॿुधायो त असांजी जेके एक्सपर्ट्स आया उन्हनि ऐं सर्टिफिकेट बि डिस्ट्रीब्यूट कयासीं डॉक्टर साहब वारा सभई सां गॾु हुआसीं असां चाहियूं था त सिंध फूड अथॉरिटी हिकिड़े नए इनोवेटिव आइडिए ते कमु पई करे त यूनिवर्सिटियुनि में जेके असांजा फूड साइंसिस डिपार्टमेंट आहिनि तव्हांजे सिंध में 8 अहिड़ियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जंहिंमें फूड साइंसिस डिपार्टमेंट आहिनि सही हाणे उन फूड साइंसिस डिपार्टमेंट में हिकु बैच में तव्हांजा पहिरियों घटि स्टूडेंट्स हूंदा जॾहिं खां असां उन्हनि जी इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऐं उन्हनि खे ॿुधायो आहे उनजी त हाणे हिन साल सिर्फ़ु यूनिवर्सिटी में एनालिटिकल केमिस्ट्री जे अलावा बि जेको फूड साइंसिस डिपार्टमेंट आहे उन में मूंखे मैडम ॿुधायो त असांजो 90 खां 100 स्टूडेंट्स आहिनि अच्छा त जेके एंट्री थी आहे माना तमामु घणा माण्हू इंट्रस्टेड आहिनि तमामु घणा स्टूडेंट्स इंट्रस्टेड आहिनि उनखे लॻे थो त फ्यूचर हिन में आहे ज़बरदस्त त हाणे उन्हनि स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी टेस्ट जे हवाले सां कीअं ठाहियूं माना हो ईअं फील करनि पाण खे छो जो इन जी प्रैक्टिकल वारी आहे न बेसिकली उन्हनि जी लैब्स में उहे इक्विपमेंट्स कीअं असां प्रोवाइड करे ॾियूं त जेको हो टेस्ट करनि उहो 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट सां गॾु हुजे इहो अमूमन इहो पहिरीं दफ़ा हिकिड़ो इनोवेटिव आइडिया सां गॾु असां आया आहियूं असां कराची यूनिवर्सिटी में विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ असां लैब ठाही आहे जेकी केमिकल टेस्ट बि करे थी बायोलॉजिकल टेस्ट बि करे थी माइक्रोबायोलॉजी जो बि टेस्ट करे थी उनजो मॉडल ठाहियो आहे असां हिकिड़ो
त जंहिंमें स्टूडेंट्स वेही उहे टेस्ट फ़राहम कंदा जंहिंजो रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट हूंदो. सही. माना उहो ईअं पाण खे फील कंदा त उहो कंहिं प्राइवेट जॉब था करनि. स्टूडेंट्स विल फील लाइक दिस. त उहो प्राइवेट जॉब था करनि ऐं उहा जेकी प्राइवेट जॉब में उन्हनि वटि को सैंपल आयो आहे उनजो उनखे रिज़ल्ट 100% ई एक्यूरेट ॾियणो आहे. सही. उन में अमूमन छा आहे जो जेके एक्सपेरिमेंट्स ईंदा आहिनि जेके लैब्स जेके पढ़ायो वेंदो आहे स्टूडेंट्स में उन में एक्यूरेसी जी तरफ़ ध्यानु न ॾिनो वेंदो आहे. हाणे असां उन एक्यूरेसी जी तरफ़ ध्यानु था ॾियूं ताकी असां हाणे उन जे लाइ असां हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो माहौल क्रिएट कयो आहे त उन में जेकी फंड्स जी कमी हूंदी आहे केमिकल्स न आहिनि अक्सर इक्विपमेंट्स न आहिनि त असां इक्विपमेंट्स बि हथु कयूं पिया ऐं केमिकल्स बि उन्हनि खे ॾियूं पिया. पर असां इन शइ खे कंटिन्यूटी सां कीअं हलायूं उन जे लाइ असां हिकिड़ो इहो रखियो आहे त हिकिड़ी नॉमिनल चार्ज रखी आहे टेस्ट जी जंहिंमां असांजो पंहिंजो ख़र्चु निकिरी वञे. माना उनखे असां ब्रेक इवन पॉइंट ते हलाईंदासीं त जेको बि असांजो ख़र्चु आहे उनजो टेस्ट जो ख़र्चु बि निकिरी वञे ऐं स्टूडेंट्स जेको रिज़ल्ट ॾिए मसइलनि मां सखर मां शिकारपुर मां जेकाबाद मां 200 सैंपल्स खणी आयुसि खीर जा. हिननि खे ॾिना कराची यूनिवर्सिटी में ॾिना त भई मूंखे टेस्ट करे ॾियो. सही. पर इहे मां पंहिंजी यूनिवर्सिटी खे ॾिना. मां कंहिं कमर्शियल लैब खे न ॾिना. उन्हनि एग्ज़ैक्टली मूंखे टेस्ट ॿुधाया. ईअं मां हाणे 100 सैंपल्स कंदा आहियूं असां कराची में खणंदा आहियूं पोइ यूनिवर्सिटी में मोकिलींदा आहियूं ऐं यूनिवर्सिटी उनजो हिकिड़ो जंहिंखां सैंपल खणूं था नॉमिनल फीस आहे उनजी. उहा फीस पे थींदी त यूनिवर्सिटी में उहे केमिकल्स अची वेंदा उहे इक्विपमेंट्स नया बि अची वेंदा उनजो हिकिड़ो फंड क्रिएट थी वेंदो न त उन सां इहो थी वेंदो त हिकिड़ी प्रैक्टिकल लैब थी वेंदी. असां कमर्शियल लैब्स में वञूं था या उन्हनि ते जेको असां डिपेंडेंसी रखूं था हिकिड़ो त उनजी फीस तमामु घणी आहे. ॿियो असांखे एॾो 100% एतबार बि न आहे त कमर्शियल लैब जेकी आहे उहा उनजा जेके रिज़ल्ट्स आहिनि उन्हनि खे असां कीअं काउंटर चेक कीअं कयूं त उन लाइ असां वटि पंहिंजी जेके लैब्स यूनिवर्सिटीज़ में ठाहियूं आहिनि 8 में. हाणे हिकिड़ी कराची यूनिवर्सिटी में ईअं असां टंडे जाम में बि कमु पिया कयूं. जामशोरो में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आहे. उहो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साईं उन्हनि जे बारे में तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदो त कॾहिं ठहियो छो ठहियो उनजा अग़राज़ मक़ासिद कहिड़ा हुआ ठाहिण जा. पोइ उन में असां पंहिंजी लैब था ठाहियूं जेकी प्रैक्टिकली हैदराबाद डिवीज़न जा जेके बि सैंपल्स आहिनि असांजा उते थियनि बजाए असां कराची खणी अचूं असां उते कराए वठंदासीं पंहिंजा सैंपल्स जा टेस्ट. उन में असांखे इहो फ़ाइदो थींदो या फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स खे इहो फ़ाइदो थी वेंदो त अगरि उहो कंहिं टेस्ट जा सम्झो त 10,000 रुपया पिया ॾियनि कंहिं टेस्ट जा 20,000 रुपया पिया ॾियनि उते हुनखे 4-5 रुपये में टेस्ट थी वेंदो. सही. ठीकु आहे न त हिकिड़ो त हुनजी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आहे. ॿियो इहो आहे त असांखे 100% ख़बर आहे त असां टेस्ट जेको कयूं पिया उन में मोस्ट सीनियर न गवर्नमेंट जेके इदारा आहिनि इन्हनि में असांजा अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि अहिड़ा गोहरे नायाब लिकियल वेठा अथव. जॾहिं मां विज़िट करे ॾिठो मां पाण हैरान थी वियुसि त असांजी यूनिवर्सिटीज़ में अहिड़ा प्रोफेसर्स वेठा आहिनि जंहिंजी 2-3 PhDs थियल आहिनि जंहिंखे दुनिया रिकॉग्नाइज़ थी करे इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में उन जा आर्टिकल्स था छपजनि. जीअं साईं वारनि वटि बि काफ़ी अहिड़ा जेके प्रोफेसर्स आहिनि जेके इंटरनेशनल लेवल जा प्रोफेसर्स आहिनि. पोइ असां उन्हनि खे प्रैक्टिकल में छो न खणी अचूं. छो नथा खणी अचूं. सही ॻाल्हि आहे. माना असां उन्हनि जी यूटिलिटी प्रैक्टिकल खणी अचूं इन सां उन्हनि खे बि फ़ाइदो थींदो. बिल्कुलु ठीकु आहे. इन सां स्टूडेंट्स खे बि फ़ाइदो थींदो. स्टूडेंट्स बजाए पढ़ण खे माना उनखे हिकिड़ो फील कंदा त जीअं ऑन जॉब ते अची आहे. मसइलन असां इंटर्नशिप ट्रेनिंग जे लाइ अगरि 1.5 महीने जे लाइ या 2 महीननि खे खणूं था त 30,000 रुपया असां उन्हनि खे स्टाइपेंड बि ॾियूं पिया. अच्छा. हा असां स्टाइपेंड बि ॾियूं पिया उन्हनि खे पंहिंजो ख़र्चो ॾींदा आहियूं. मसइलो मां अगरि टंडे जाम मां कंहिं स्टूडेंट्स खे खणी थो अचां कंहिं बैच खे हाणे मूं वटि सिंध यूनिवर्सिटी जूं 2 बैच आहिनि जेके असां पूरी कराची में असां उन्हनि खे विज़िट्स था करायूं. उन्हनि खे कराची यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जीअं टेस्ट आहिनि जीअं हाणे असां उन्हनि खे लैब जी एक्यूरेसी जा टेस्ट आहिनि या प्रैक्टिकल छा थो थिए कीअं बिज़नेस हले थो फूड बिज़नेस उन्हनि जी जॉब्स किथे किथे थी सघे थी उन्हनि सभिनि जायुनि ते असां उन्हनि खे विज़िट कराईंदा आहियूं. अच्छा. प्रैक्टिकली. ठीकु. त उन्हनि स्टूडेंट्स खे हिकिड़ो एक्सपोजर मिले. टंडे जाम वारनि खे एक्सपोजर मिले कराची जो. जामशोर वारनि खे कराची जो एक्सपोजर मिले त उहो एक्सपोजर जे लाइ न सिर्फ़ु इहो हाणे असां वटि बलूचिस्तान खां बि अचनि था. अच्छा. हा उहे बि इंट्रस्टेड आहिनि. बलूचिस्तान खां बि असां वटि अचनि था. इवन KPK खां बि कुझु स्टूडेंट्स अचनि था जेके हाणे असां वटि कराची यूनिवर्सिटी में जेके असां कोर्सिस करायूं पिया उन में इंट्रस्टेड हूंदा आहिनि उहे अचनि पिया. या
असांजा टेस्ट हाणे जीअं बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी पंहिंजा जेके बि एग्रीमेंट्स हुननि जा पंजाब फूड अथॉरिटी सां हुया या जेके टेस्ट उतां पिया कराइनि लाहौर मां या उहे सभु हाणे असां सां उन्हनि एग्रीमेंट करे छॾियो आहे ज़बरदस्त असांजी एक्यूरेसी खे ऐं हिननि खे ॾिसी उहे सभु हाणे असां ॾे पिया अचनि ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहितरीनु ॻाल्हि आहे इन हवाले सां जेको मां तव्हांखे ॿुधायां पियो त असां हाणे उन्हनि शयुनि ते कंसंट्रेट पिया कयूं त जेकी प्रोडक्शन अचे पई न स्टूडेंट्स जी जेके स्टूडेंट्स असांजा अचनि पिया उहे असां जा अहिड़ा स्टूडेंट लाइक़ु अचनि जेके वञी जॾहिं फील्ड में अचनि त पोइ उन्हनि खे फर्दर ट्रेनिंग जी ज़रूरत न पवे उहो पास आउट ई उहे कयूं जेके प्रैक्टिकल्स अचनि ईंदा अच्छा सर हिकिड़ो सवाल मां तव्हांखां इहो ज़रूरु हींअर कंदमि उन खां पोइ डॉक्टर्स ॾे बि ज़रूरु वेंदमि त तव्हां जो जॾहिं खां तव्हां जॉइन कयो आहे हिन डिपार्टमेंट खे सिंध फूड अथॉरिटी खे त तॾहिं खां असां ॾिसूं पिया त इहा जेका रिसेंट जेका तव्हां इनोवेशन आंदी आहे उहा तव्हां ई आंदी आहे त लैब टेस्टिंग में तव्हांजो वधीक जेको रुझान आहे ऐं जेको फ्यूचर में जेके जीअं तव्हां ॿुधायो त स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे फ्यूचर में किथे जॉब बि कनि त असांजे सिंध जे लाइ सिंध जे फूड जे लाइ हेल्थ जे लाइ उहे दुरुस्त हुजनि या सुठा साबित थियनि त इहो आइडिया उहो सिर्फ़ु तव्हांजो ई हुयो या इन में जेको आहे उहो ॿिए कंहिं जेके क्रेडिट थो वञे छो जो तव्हांजे अचण खां पोइ ई असां इहे ॾिसूं पिया न हाणे ॾिसो न असांजा कुझु स्टूडेंट्स अथव जेको मां तव्हांखे जवाबु बि ॾियां पर मां तव्हांखे ॿुधायां त जेके असां टंडे जाम खणी आया आहियूं कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करनि पिया यूनिवर्सिटी में असांजी लैब्स में अंदरि जॉब पिया करनि ऐं उहे टंडे जाम जा स्टूडेंट्स आहिनि हाणे उहे गोल्ड मेडलिस्ट थी विया आहिनि हिते अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल खयो अथऊं वरी हाणे उन्हनि जी स्कॉलरशिप जेकी आहे यूरोप जे सुठे मुल्कनि में थी वई आहे ज़बरदस्त न रुगो इहो पर हाणे ॿ टे स्टूडेंट्स त असांजा निबोश या टेस्ट बि पास कया आहिनि जंहिंजी मिडल ईस्ट में पघार ई सम्झो त 10 लख प्लस आहे इहे उहे स्टूडेंट्स आहिनि जेके असां वटि जीअं असां क्रीम पई आहे असां सिर्फ़ु उन्हनि खे ट्रेंड कयूं न प्रॉपरली असां उन्हनि ते इन्वेस्ट कयूं ट्रेंड कयूं त बुनियादी जेके सिंध फूड अथॉरिटी आहे न उहा अकेली कुझु बि न आहे हिकिड़ी नंढड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे सरकारी आहे लिमिटेड सोर्सिस ऐं लिमिटेड बजट सां गॾु जंहिंजो बजट ई 20 करोड़ आहे टोटल उन सां गॾु असां कमु पिया कयूं त उन में असां जेके बि अहिड़ियूं एजेंसीज़ जेके बि अहिड़ा इदारा जेके फूड सां रिलेटेड आहिनि ऐं दुनिया में उहे मिली कमु करनि पिया फूड अथॉरिटी सां गॾु त असां छो न उन्हनि इदारनि खे मिलायूं असां 100 जे क़रीब अहिड़ा इदारा आइडेंटिफाई कया आहिनि मसलन असांजी यूनिवर्सिटीज़ 8 त असां यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई करे वरितियूं त इन्हनि सां गॾु मिली कमु कंदासीं अहिड़े तरीक़े सां ॿिया फेडरल गवर्नमेंट जा बि इदारा आहिनि जीअं पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी आहे इन सां बि मिली गॾु कमु कंदासीं अहिड़े तरीक़े सां फेडरल गवर्नमेंट जा ॿिया बि खोड़ इदारा आहिनि जंहिंसां असां गॾु मिली कमु कंदासीं अहिड़े तरीक़े सां प्राइवेट इदारा बि आहिनि प्राइवेट लैब्स आहिनि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जीअं साईं वारनि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स आहिनि अहिड़ा मदरसा आहिनि अहिड़ियूं ॿियूं शयूं आहिनि जंहिंसां गॾु मिली असां जॾहिं उहे 100 जिक्सा पज़ल्स मिलंदा त हिकिड़ी पिक्चर ठही वेंदी तव्हांखे फूड जी उन पिक्चर जो उनवान इहो हूंदो त सेफ हेल्दी हाइजीनिक फूड हाणे मिलंदो एॾा सारा असां माण्हू मिलूं था पाण में सभु एक्सपर्ट्स मिलूं पिया असां त हाणे घटि में घटि श्योरिटी थियणु खपे सर तव्हांजे लाइ केतिरो चैलेंजिंग हूंदो आहे हिकु गवर्नमेंट जे डिपार्टमेंट में रही करे उनखे जेके शयूं आहिनि उनखे दुरुस्त कयूं वञे छो काफ़ी असांजो इहो आहे गवर्नमेंट सेक्टर में रही तव्हां जेके बि शइ कंदव उनजे लाइ परमिशन तव्हांखे घणियूं शयुनि खां गुज़रणो पवंदो पर इन जे करे गवर्नमेंट हिकिड़ी अथॉरिटी ठाही आहे सो अथॉरिटी ठाहिण जो मतिलबु इहो हुयो त असां तव्हांखे अथॉरिटी था ॾियूं त तव्हां वञी कमु कयो मूंखे एक्ट जे तहत इहा इजाज़त आहे त मां जेको बि कमु बहितर सम्झां एक्ट जे मुताबिक़ करे छॾियां पोइ वरी मां इहा शइ बोर्ड में खणी वेंदो आहियां त मां हे कमु कयो आहे या मां हे कमु करण वारो आहियां 2 शयूं आहिनि हे कमु करण वारो आहियां हे कमु कयो आहे हाणे अगरि हे कमु कयो आहे ऐं हिन जी एक्ट जे मुताबिक़ कयो आहे ऐं हिन जी तमामु घणी ज़रूरत हुई जेसि ताईं बोर्ड जो डिसीशन थिए या बोर्ड जी मीटिंग थिए त असां हाणे करे छॾियो पोइ बोर्ड उनखे रिव्यू कंदी आहे त कंटिन्यू रखो ठीकु आहे सही आहे वरी जेके नया कम आहिनि उहे बोर्ड में खणी वेंदा असांखे फर्दर परमिशन जी न हूंदी असांजी बोर्ड आहे उन में 7 सेक्रेटरीज़ आहिनि ऐं प्लस सर्विंग सेक्रेटरीज़ आहिनि प्लस उनजे अलावा प्राइवेट मेंबर्स बि आहिनि जंहिंमें तव्हांजा रिटेलर एसोसिएशन बि ईंदी आहे होलसेलर एसोसिएशन बि अची वेंदी आहे तव्हांजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐं ॿिया खोड़ इदारा काफ़ी आहिनि उहे उन में प्राइवेट मेंबर्स बि आहिनि त उहे सभु मिली असां
फूड जे हवाले सां हा। बहितर शयूं करे रहिया आहियो, कमु करे रहिया कंदा आहियो। आहियूं। त इन हा। करे इहो अथॉरिटी ठाहिण जो मक़सदु इहो हुयो त शयुनि खे ईज़ कजे, सहूलियत ॾिजे, त जीअं सहूलियत सां डिसीशन थियनि, क्विक फ़ैसिला थियनि, जल्दी फ़ैसिला थियनि, ताकी असां इम्प्लीमेंट कयूं ऐं माण्हुनि जी सिहत ते असां इहो कंप्रोमाइज़ नथा करे सघूं त अॼु खाई वठे सुभाणे ॾिसंदासीं। असां वटि त टाइम ई न आहे न। तव्हांजा 3 वक़्त जो 3 वेला आहिनि, असांखे 3 सेफ करणा आहिनि। एॾा सारा होटल्स मशरूम ग्रोथ आहे। हाणे तव्हां ॾिसो न त माण्हू जेके आहिनि वधि में वधि प्रेफरेंस ॾियनि था ॿाहिरि मानी खाइण खे। छो जो मसलन इंटीरियर सिंध खां को माण्हू आयो, हिते हुनजा ॿार बच्चा न आहिनि, सर्टेनली होटल ते वेंदो न खाइण लाइ मानी। बिल्कुल, हा। कुझु जेके फैमिलीज़ हिते रहनि थियूं उन्हनि जा पंहिंजा किचन्स आहिनि या जेके बि आहिनि, हा। पर मसलन पाकिस्तान मां किथों बि केरु आयो कराची में जॉब करण जे लाइ, KPK में आयो, पंजाब मां आयो, के आयो, त अकेलो आयो न। अकेलो आयो, सही ॻाल्हि आहे। पाण त कुक नथो करे, हर कोई पाण त कुक न कंदो। बिल्कुल बिल्कुल, उहो वेंदो ॿाहिरि वञी को ॿाहिरि का न का शइ खाईंदो। डेफिनेटली, हा। स्पेशली उहे माण्हू जेके वॾियुनि वॾियुनि जॉब्स ते था अचनि, होटलनि में रहनि था, या असांजा अहम माण्हू आहिनि न, उहे जे मसलन वॾा वॾा प्रोफेसर आहिनि, डॉक्टर आहिनि, हिकु ट्रेवल था करनि। हाणे हिन होटल में जेके सवे अहिड़ा माण्हू अचनि था जेके हिन मुल्क जा असासा आहिनि, क़ीमती असासा, जेके असां सभु जमा थियूं था। अगरि उन्हनि जी खाद खुराक जो असां ख़्यालु न कंदासीं, होटल्स खे चेक न कंदासीं, असां इन्हनि त उहो कंहिं ते वञा ट्रस्ट कंदा बिल्कुलु पंहिंजे खाधे जे मामले में। इन सां गॾु अञा वधीक जेको आहे उहो ॻाल्हियूं कंदासीं डॉक्टर साहब सां ऐं DG साहब सां। बट ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। बट ब्रेक खां पहिरीं जिन असांखे स्पॉन्सर कयो आहे असांजे हिन प्रोग्राम खे, उन्हनि जो असां ज़िक्र करणु न विसारींदासीं। ज़िक्र करणु विसारे छॾींदासीं त नाइंसाफ़ी थींदी। असांजे हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे डालडा कुकिंग वान। डालडा वान जो चवणु आहे, जहाँ मामता वहाँ डालडा, न बदले ज़माने न बदला डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। डालडा हमेशा से ही आप और आपकी फैमिली की सेहत का भरपूर ख्याल रखते आया है। डालडा अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत से दे हेल्दी कुकिंग सोल्यूशन जो कि रखे आपके खानों की ग़िज़ायत बरक़रार। इन सां गॾु नंढड़ी ब्रेक जी तरफ़ वञूं था। अञा वधीक ॼाण जूं ॻाल्हियूं, अञा वधीक कचहरियूं बाक़ी आहिनि, पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ मिलंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक जी नाज़रीन। हिकु ॿी ज़बरदस्त शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे। डॉक्टर साहब जो तारीफ़ त जेको आहे मूं कराए छॾियो आहे, बट मां उन्हनि जे कम जे बारे में अॼु ॼाणणु चाहींदमि त कीअं सिंध फूड अथॉरिटी से आप लोग या आपका इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे कोलैबोरेट कर रहा है और आपकी अपनी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसमें। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने करवा लिया जी। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने सेंटर को बड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँ। बेसिकली ये भुट्टो साहब का विजन था 1976 में। 1976, हाँ। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये हमारे सिंध यूनिवर्सिटी में ये एस्टेब्लिश हुआ। ये सिर्फ हमारे सिंध यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस, अच्छा, ऑल प्रोविंसेस। तो वो एस्टेब्लिश हुए थे 1976 में। आप ये देख लें कि उस टाइम के हुक्मरानों ने ये महसूस किया कि यूनिवर्सिटी टीचर दे आर बिजी इन द टीचिंग, दे हैव नो टाइम टू डू द रिसर्च, देयरफॉर देयर शुड बी डेडिकेटेड सेंटर। तो रिसर्च के लिए वो सेंटर होने चाहिए। और बिलीव में ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आइडिया था उस वक़्त से, क्योंकि अब देखें यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि वो उसकी पब्लिकेशंस के ऊपर होती हैं, PhD कितने प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर होती हैं, कितने प्रोजेक्ट्स विन किए हैं उनके ऊपर होती हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इवन मतलब उनके साइटेशंस हैं। तो मतलब डिफरेंट वो है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ों को नहीं जाता। लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त विज़न था। एक PhD को जब बाहर भेजते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च होता है।
لاسٹ ہمارے فسکل ایئر میں ہمارے سینٹر نے 14 PhD پروڈیوس کیا ہیں. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 کروڑ صرف وہ ہمارے سینٹر نے، اگر یہ باہر جاتے تو ہمارے پاکستان کا کتنا خرچ ہوتا؟ 70 کروڑ روپیہ. یہ صرف ہم نے PhD پروڈیوس کیے ہیں 14، اور 30 ہم نے MPhil پروڈیوس کیے ہیں. اچھا. اور ہمارے نیشنل انٹرنیشنل ریسرچ پروجیکٹس ہیں. تو یہ تو خیر میں آپ کو بریفلی انٹروڈیوس کیا ہمارے سینٹر کا، اور الحمدللہ ایک بڑا بہترین رول ہے جو ہمارے سندھ یونیورسٹی میں ہے ہمارا سینٹر. تو ہمارے ٹوٹل 10 فیکلٹی ممبرز ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کسی ایک کی بھی آپ پروگریس دیکھ لیں تو بہت ہی ایکسیلنٹ الحمدللہ. باقی سندھ فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے، سندھ فوڈ اتھارٹی کی نے ہمارے سینٹر میں ڈویژنل ٹیسٹنگ لیب وہ اوپن کیا ہے. اور میں مطلب آغا فخر حسین کو، یہ سندھ فوڈ اتھارٹی کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. اس میں آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز دیکھ لیں، PSQCA دیکھ لیں جو سٹینڈرڈز بناتے ہیں پورے پاکستان میں، اس کا رول ہے. PCSIR ہے، ایون پرائیویٹ لیبز ہیں. ان سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اپنے کام کا، اور بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے. اور وہ آئیڈیا بھی انہی کا ہے. بالکل. کہ دیکھیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جب اتنا انفراسٹرکچر ہے تو ان کی لیبز کو اسٹرینگتھن کیا جائے. انہوں نے نہ صرف ہمارے پاس لیب کھولی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیفرنٹ NGOs ان سے انسٹرومنٹس وغیرہ وہ لے کر ہماری لیب کو پرووائڈ کیے ہیں. پھر یہاں تک نہیں، ان کی آج مطلب جو پروگرام تھا بہت ہی اچھا اور بہت زبردست پروگرام تھا. یورپی یونین وہ پروگرام کروا رہی ہے ISO 17025 کے حوالے سے. اچھا پروگرام جس میں ہمارے سندھ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز وہ بھی انوالو رہی تھیں، اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ بھی تھے. تو ان کی ایک ٹریننگ کا پروگرام تھا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف انسٹرومنٹ سپلائی کیے ہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کی ٹریننگ، ان کی سکلڈ مین پاور ان کو انہانس کرنا صحیح ہے. تو یہ بھی مطلب ان کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد جب کوئی بھی لیب ہوتی ہے، ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کی ایتھینٹیکیشن وہ بہت اہم ہوتی ہے. جب تک ایکریڈیشن نہ ہو اس وقت ان کے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کے ریزلٹس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی ایک سندھ فوڈ اتھارٹی کا اسٹیپ تھا، اور وہ بھی NGOs کے تحت کہ آپ جو لیبز کھولی ہیں یونیورسٹیز میں ان کو ایگریگیٹ کروا کے بھی دیں. ورنہ آج کل جو اس وقت ہمارے یونیورسٹیز فنانشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، ان کے شاید اس میں بات بھی نہیں تھی یہ ساری چیزیں. بالکل. اور ایک اور اہم چیز جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اگر لیب سندھ فوڈ اتھارٹی کہیں پہ کھول لے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پورے سندھ کو اتنے زیادہ فوڈ کے سیمپلز ہیں کور کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ ناممکن. بالکل پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ لیبز کھولی جائیں پورے پروونسز میں، ایون وہ سکھر تک. بالکل، اس کی ضرورت بھی تھی. صحیح. یہ انہوں نے ان کی مطلب ایفرٹس اور ہماری دعا ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کی کہ ان جیسے مطلب ایک DG ملے ہیں ان کو. ہم تو ان کی صحت کے لیے، ان کی توفیقات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا جو بھی تعاون ہے ہمارے سینٹر کا وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ رہے گا. یہ ہمارا اپنا ملک ہے. ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے کہ یہ کام آج نہیں تو دیکھیں پازیٹیو بڑھ رہا ہے آگے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے، اور کچھ نہ کچھ آگے والی جو نسلیں آئیں گی ڈیفینیٹلی اس کام کو آگے بڑھیں گی. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. آگے ہرڈلز آتے ہیں کافی، جب بھی کام ہوتے ہیں چیزیں ہرڈلز آتے ہیں، لیکن ان کو عبور کرنا وہ بھی ہمارا کام ہے، ان کو فیس کر کے. اور جو ہمارا ایک سامنے ایک ویژن ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہیں
उस पर हमने काम एक साथ करना है, और इस कौम और मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए, इस धरती के लिए। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, जिस तरीके से मेहनत हो रही है, कि सिंध के अवाम के लिए जो चीज़ भी उनको मिले वो सेफ़ हो, सेहत के लिए बेहतर हो, फ्राम मैन्युफैक्चरिंग टू दी कंज्यूमर पॉइंट। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आगा फ़खर साहब पहले बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मैं ये कहूँ कि लैब से या इस चीज़ से जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं, और ज़्यादा जो है वो 92 बता रहे थे कि 100 स्टूडेंट जो है वो आए हैं, उनकी न्यू एडमिशन्स हुई हैं। तो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो कितनी बेहतरी देख रहे हैं? देखिए ये अट्रैक्शन तो बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। जब देख लें कि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं और लैब में काम भी कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस महंगाई के दौर में अगर स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंटशिप में किसी की हेल्प हो जाती है और उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, अभी तो वो पढ़ रहे हैं, फिर जब वो यहाँ से निकलेंगे तो आप हमारी इंडस्ट्री को एक ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। बिल्कुल। तो जब ये अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे डे बाई डे जितने भी फूड साइंस डिपार्टमेंट हैं, इनमें इनका मेरिट भी हाई होता जाएगा और रुझान भी बढ़ता जाएगा बच्चों का इस फील्ड में। बिल्कुल सही बात है। और जो एतिरो रुझान जेको आहे असां पहिरीं कोन ॾिठो हुयो, ऐं मां त इहो ई चवंदमि त इहो सॼो क्रेडिट जेको आहे उहो सिंध फूड अथॉरिटी थी वञे, ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि, सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि DG साहब ते थी वञे, जेको इहो आइडिया आयो ऐं इन शइ ते वधीक फोकस करे रहिया आहिनि। हिन पासे असां वटि ॿिया बि डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि, डॉक्टर मुफ्ती सैयद आरिफ अली शाह, त उन्हनि खां बि ज़रूर पुछंदासीं। त पहले तो मुझे ये बताएं कि हम अपने खाने में जब हमारे पास सर्व होता है, हमारी प्लेट में हम ये नहीं देख सकते हैं, हम ये ना नहीं पता कर सकते कि वो हलाल है या नहीं हलाल है। आप लोगों को तो पता चल जाता है एक प्रोसीजर के थ्रू, आम जो आदमी है उसको कैसे पता चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो धरती TV का, आपका, मैडम का, सर आगा साहब का, DG सिंध फूड अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात ने, इदारे ने इतने अहम मौजू पे हमें मौका दिया। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल पर आने से पहले अगर 1-2 मिनट मुझे इजाज़त दे कि 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में हलाल की अहमियत क्या है और इस वक्त इसकी ज़रूरत किस हद तक है, और इसके अलावा जो है वो अगर कुछ मुश्किलात है या मार्केट एनालिसिस है तो उसका हल क्या है, जैसे आपने सवाल भी किया माशाल्लाह से। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। इरशाद बारी ताला है कि ए लोगो, ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करें और खाएँ। बिल्कुल। अब यहाँ पे गोया कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, एक हलाल और एक तय्यब। कुरान का एक एक हरफ, एक नुक्ता, एक लफ्ज़, उस हर चीज़ की एक मीनिंग है, कोई चीज़ मीनिंगलेस नहीं है। सही। तो हलाल का वर्ड अलग है, तय्यब का अलग है। सही। तो उस वजह से जो है वो हलाल पे अपनी अहमियत है, तय्यब पे अपनी अहमियत है यकीनन। दूसरी इस आयत करीमा में एक बारीक इशारा भी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि ईमान वालों से सिर्फ़ ख़िताब किया है या अपने अम्बिया से ख़िताब किया है, बल्कि ये फरमाया ए लोगो। सो द पीपल आर कॉमन, आइदर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम।
تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا، جیسے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ چائنا میں باہر ملکوں میں حلال ریسٹورینٹس پہ رش ہوتا ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب تمام انسانیت کے لیے کیا ہے. تو اٹ مینس کہ حلال اور طیب وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، نان مسلمس کے لیے بھی دنیا میں سب سے بیسٹ فوڈ ہے، کیونکہ یہ سیف اور ہیلدی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم آتے ہیں کہ طیب کیا چیز ہے، تو طیب کی جو تفسیر مفسرین حضرات نے فرمائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ڈیلیشیس ہو، ہیلدی ہو، سیف ہو، اور اس میں کوئی مضر صحت چیز نہ ہو، انگریڈینٹس نہ ہو، مٹیریل نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ اس میں آتی ہے، ایک مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، لیکن دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ اور گرے ایریا ہے. تو اس حدیث سے لے کر ہمیں سائنس کی اور خاص طور پر آج کے دور میں فوڈ سیفٹی کی اور اتھارٹیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یہی سے ایک یعنی ایک میوچل ایک ایڈونچر اور وہ شروع ہوتا ہے کہ حلال، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین، حلال از کلیئر. جب حلال کلیئر ہے تو ہمیں اس میں سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حلال کلیئر ہے. حرام بین، حرام بھی کلیئر ہے، جیسے پگ ہے، حرام ہے، تو اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. بالکل. پر آج کل ہمارے ملک میں کافی ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو ہمیں بریانی میں نہیں پتہ چلتا ہم کس چیز کا گوشت کھا رہے ہیں، ہم کڑھائیوں میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس چیز کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کیا آپ کی نالج سے میں اپنی میں نالج جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم ویسے ہی پتہ کر سکتے ہیں دیکھ کے یا چکھ کے؟ اس میں جو ہم نے میکنزم اس کے لیے ڈیولپ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. تو جو تیسری چیز ہے نا وہ بینہما مشتبہات، کہ بٹوین دیم کچھ گرے ایریاز ہے. یہی سے ضرورت پڑتی ہے جب آپ پروسیس فوڈ یوز کرتے ہیں، جب آپ را فارم میں چیز نہیں ہوتی. آپ نے آم جو ہے وہ درخت سے اتارا، کاٹا، اور یہ کلیئر حلال ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کا آم کا ٹین پیک، ٹیٹرا پیک جوس پیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے 10 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. یہی وہ گرے ایریا ہے جس میں ہمیں سین فوڈ اتھارٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہائیجین اور سیفٹی کو دیکھتے ہیں. اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کیمسٹری کے اور فوڈ سائنس کے ایکسپرٹ ہوں گے. اس میں ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم شریعہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ حلال بغیر شریعہ کے نہیں آ سکتا. تبھی ڈی جی صاحب اتنے ایکٹیو رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بریانی یا ہم کوئی بھی پروسیس فوڈ کھاتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میں ایک دفعہ ایک انڈسٹری کے حلال آڈٹ پہ تھا. تو سر اس میں یہ جو چنگم ہے، ببل گم ہے، پہلے 8 آنے کا ملتا تھا، اب 2, 4, 5 روپے کا ہوگا. تو اس میں سر میں نے بیک ٹریسیبلٹی نکالی اس ببل گم کی، کہ اس کا را مٹیریل پاکستان کا اپنا ہے، میڈ ان پاکستان تو لکھا ہے، جو ہم بڑے شوق سے چباتے ہیں. لیکن جب میں نے بیک ٹریس کیا تو دنیا کے 13 ممالک سے اس کے را مٹیریل 8 آنے کے ببل گم میں امپورٹ ہو رہے تھے اور پروسیس ہو رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں اس کا ببل گم کا فلیور کہاں سے آیا. پھر فلیور کے بعض اوقات آپ اسٹرابری فلیور کھا رہے، آپ مینگو فلیور چبا رہے، آپ کو کون سا فلیور پسند، اس فلیور کے بعض اوقات 100+ سب انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اس ایک کی ٹریسیبلٹی نکالنی ہوتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو ہمارا گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، کہ یعنی یہاں سے ضرورت ریز ہوتی ہے ایسے اتھارٹیز کی. اگر ہم حلال انڈسٹری کی طرف آئے تو حلال انڈسٹری اس وقت $ٹریلینز کی انڈسٹری ہے،
और अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया का शेयर बहुत कम अच्छा है हलाल इंडस्ट्री, हाँ कंज्यूमर सोसाइटी हम हैं, लेकिन हमारा शेयर ना होने के बराबर है। सही। अब पाकिस्तान का 0.5 में शेयर आता है, तो इस इंडस्ट्री से मैक्सिमम कैसे अपना शेयर गेन किया जाए ताकि अपनी इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। नंबर 2, चूंकि हम मुसलमान हैं तो हलाल सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है, बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। सही। तो कैसे मेक श्योर करें, जैसे आपने सवाल किया कि मैं बिरयानी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो बिरयानी का अगर हम ले तो कुछ तो रॉ मटेरियल्स है, चावल है हलाल है, चावल में भी GMOs जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, हाँ ये मुझे आज पता चला है। हाँ और इसी तरह आपका जो है वो इसमें गोश्त यूज़ होता है, इसमें आपके फ्लेवर यूज़ होते हैं, इसमें आपके जो है मुख्तलिफ फ्लेवर एनहांसर होते हैं, कलरिंग्स है, स्पेशली कलरिंग्स काफ़ी मां सम्झो त दिलचस्प टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं। इन लाइ असांखे अञा भी टाइम जेको आहे वो दरकार है, पर मां चाहींदमि त क्या करे कमर्शियल ब्रेक जो है, कमर्शियल्स देखना लाजमी है हमारे नाज़रीन के लिए। तो नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक की तरफ वञूं था, नंढड़ी सी ब्रेक आहे, जल्दी सां मोटी था अचूं।